After 9 months of cycling in Gujarat, my cycling journey through Maharashtra kicked off with a broken chain. And to make things trickier, it happened in a remote Adivasi area where no repair shops were around. तो मैंने टूल तो निकाले हैं पर हथौड़ी होती तो अच्छा रहता, हथौड़ी नहीं है मेरे पास. With no other option, I started pushing my bicycle one slow step at a time, maybe for a kilometer or two. Just when I thought the situation was slipping out of control, I spotted a house belonging to a Adivasi family. I asked for help, and what happened next, that's something you have to go to see yourself. ये घर मेरे को दिखा, मैंने पूछा हथौड़ी है आपके पास, तो इन्होंने बोला कि हाँ है. चेन ठीक कर दी हमने, और जिन्होंने मेरी हेल्प की है जितेश, आप इनके पापा हैं. देखो मदद तो मिली. अब मैंने कितना अच्छे से ठीक किया नहीं पता, पर उम्मीद करो कि 6-7 किलोमीटर दूर जो दुकान है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ. A glimpse into Maharashtra in just a few minutes. So in this episode, I will show you a month-long journey through Maharashtra covering over 1000 kilometers all in just in few minutes. From the very start, this part of Maharashtra gave off a strong sense of tribal culture and community. In fact, I saw hundreds of Adivasi people gathered into the funeral of an elderly man, a moment that really moved me on. इतने लोग थे इस शव यात्रा में. भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दे. Hills, hospitality and the unexpected. Maharashtra turned out to be full of hills, reminding me of climbing in Meghalaya. The roads were smooth and the ride was fun, at least in the beginning. But I had no idea what I'm going to face at the first night here in this state of India. It was dark. I entered in a small city, tried and searching for a place to stay. Some kind-hearted kids offered me a shelter in the compound of a factory, but sadly the owner, he did not allow me. So once again I was out in the street, unsure where would I sleep. 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया है. समझ भी नहीं आ रहा है कि किससे पूछूं कि कहाँ रुक सकता हूँ, टेंट कहाँ लगा सकता हूँ. So I dropped a message into the WhatsApp group of my Gujarati friends, and guess what? They came to my rescue even here in Maharashtra. That night I found shelter with a stranger, Ravi Bhai, I had never met before. Destination Trimbakeshwar Jyotirling. So next day I set my target to reach Trimbakeshwar, which is a very famous temple in Nasik district of Maharashtra. It is considered to be one of the Jyotirlinga. खतरनाक था यार ये बस का टर्न की. बच गया मैं. महिलाएं कैसे कपड़े पहनती हैं आपके सामने हैं. The road, it was tough, full of ups and downs, and the weather was showing no mercy on me. सामने देखो उन पेड़ों के पीछे अब माउंट एवरेस्ट जैसा दिख रहा है ये, और ये महाराष्ट्र है. इतने ऊंचे पहाड़ों वाला महाराष्ट्र. The kind of food which you will find in Maharashtra is mostly fried and spicy, which is very challenging for the stomach during the long rides. I had my breakfast there at a roadside restaurant. Even I tried to learn some new words in Marathi. मैं पूछ रहा था कि कैसे ग्रीट करते हैं, तो यहाँ बोला जाता है जय महाराष्ट्र. और जब आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो बोलना होता है कैसे आहे तुम ही. कैसे आहे तुम ही. मजे मजे. ये कोई चट्टान है, इसको काट के बीच में से रास्ता बनाया गया है. Though the views were breathtaking, but the terrain that kept testing my endurance and stamina. Unexpected lessons on the way. At one dhaba, I could not find food, but I could found stories, conversations, and warmth. कि ये सब कलरफुल टी शर्ट क्यों पहनते हैं. क्रिकेट से ज़्यादा लगाव है. क्रिकेट से ज़्यादा लगाव है महाराष्ट्र में. खबर ये मिली है कि अगले 5 किलोमीटर सीधी क्लाइंब है. तो On the way, I saw a man selling crabs, which I did not buy, but ended up buying a huge cucumber-like veggie instead. एक ककड़ी लेने वाला हूँ. 25 रुपए का एक पीस है. And after that, then come the monster climb. They call it Amboli Ghat. ये अगले कई किलोमीटर तक चलने वाली है. To be honest, I found these ghats and the climbs much tougher than the climb of Leh and Ladakh. तो पार करने के बाद ये नज़ारे हैं. देखो 5:30 बजे हैं अभी और 8 किलोमीटर और जाना है. नासिक अब 35 है दोस्तों. The sun was setting down, my shadow was growing longer, but I kept paddling and finally reached Trimbakeshwar. It was the day of Diwali.
There I met one another cyclist, an elderly man named Pradeep. ये प्रदीप हैं कि केरला से निकले हैं। कितना दिन हुआ आपको? सितंबर 28 स्टार्टिंग। ऑलमोस्ट 15-20 डेज के आसपास। गुड, कीप इट अप। सारे मंदिर आप घूमने वाले हैं। So when I was searching for a place to stay, I met with Ambadas Bhau. अंबादास पटेल। हाँ? He not only me but offered a free stay into his lodge to Pradeep Bhai also. बुला उसको भी। ओए, प्रदीप। That night both of us stayed in that room. ये और यहाँ पे आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं ना, तो ये शिवलिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 यहाँ पर दिखाए गए हैं शिवलिंग के अंदर, तो इसलिए इसको बोला जाता है ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर। From Trimbakeshwar to Nasik. So into the city of Trimbakeshwar, we explored the nearby tourist spots before setting off our journey towards Nasik. इस जगह को तीर्थराज कुशावर्त बोला गया है और श्री त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट के अंडर ये जगह आती है। सामने लिखा हुआ है कि ये गुरु गोदावरी प्रकट स्थान है, तो और ये वो जगह थी जहाँ हम कल रुके थे। अब यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे आगे के लिए। तो जो माउंटेन्स है ना, मेरे को बहुत हैरान कर रही हैं। ऐसे पहाड़ होते हैं कभी? एक ये देखो, अब ऐसा पहाड़ होता है कभी? इनकी शेप कैसी है यार, ब्यूटीफुल एक्चुअली। In the afternoon, we reached to Nasik. Since when I started from my home, I have covered more than 5,000 kilometers and it was finally the time to change the bicycle chain. As recommended by the locals at a cycle shop in Nasik, they replaced the chain. जाकर के अब शाम को करीब 5:30 बजे साइकिल रिपेयर हुई है। जगह जहाँ पर मैं भी हूँ, यह शिव शक्ति साइकिल और फिटनेस सपोर्ट बहुत किया है मुझसे। सर्विस का किया, उसका कोई पैसा नहीं लिया। According to them, it was too late because the old chain has already damaged the front crankset. ये किशोर काले भाई हैं, तो मेरी साइकिल का जो काम किया है इन्हीं की शॉप पे हुआ है, इन्हीं की टीम ने किया है। थैंक यू सो मच। तो उससे पहले आपने मेरा नाम भी लेके पहचान निकाल लिया, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। बहुत सारा राइड किया है मैंने, मतलब जहाँ जहाँ मेरे दोस्त लोग हैं आपको वेलकम करेंगे, आपको रहने का स्टे। Sadly, they didn't have the part available, so they advised me to get it done there in Pune. अब हम निकले उस जगह जहाँ पर रहने का अरेंजमेंट किया है, तो वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। A spiritual pause in Panchvati. So before continuing, I stayed at the Narayan Swami temple there in Panchvati, which I got with the help of Milind Kulkarni Bhau, who runs a Ayurvedic clinic there. I served there in the Goshala while soaking into the calm of that place. और गौशाला है, वहाँ पे गाय हैं, वहाँ चारा ऊपर है, तो यहाँ से चारा उधर भेजते हैं। Meanwhile, Pradeep Bhai continued his journey towards Prayagraj. Into the Ghats, a test of strength and spirit. The moment I left Nasik, the landscape suddenly changed. I was now surrounded by the massive hills and Ghats. The never-ending climb started to wear me down. Exhausted, I stopped for a quick tea break in front of a closed roadside hotel. As the sunset painted the sky, I was once again faced with the same challenge, and that was, where do I sleep tonight? But you know, the God, biggest planner, he always planned things ahead of you. That's when Amol Bhau entered into the story. A former army officer, now a security officer in a college of Sangamner, and he came like a blessing in the disguise. अच्छा लगा आपको देख के, और ये रोड के ऊपर और जो आपने हिम्मत किया है वर्ल्ड टूर करने का अकेले, जी काफ़ी मतलब काबिल तारीफ है सर। Later, Amol Bhau called and arranged my stay there in SMB College guest house. एंटर करते ही सबसे पहले ये वाला रूम है, टीवी वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है। इस तरफ आएंगे किचन, जो कि यूज नहीं होने वाला है। इस तरफ बाथरूम और टॉयलेट है। एक ये बेडरूम है विद एसी। अब इसमें से बस लैपटॉप निकालना है मेरे को, 1-2 कपड़े निकालने हैं। Not only the stay, he also arranged dinner for me. बाकी फेमस बिरयानी भेजी है, और क्वांटिटी इतनी ज्यादा मैं अकेला तो नहीं खा सकता, तो पक्का कल सुबह खाऊंगा भी और पैक भी करके लेके जाऊंगा रास्ते के लिए। Changing legends on the road to Shivneri Fort. The next morning, I said goodbye and set out for a historic destination named Shivneri, which is known as the birthplace of Shivaji Maharaj. That journey was not easy. The roads were narrow, often switching between the metal patches and the muddy stretches. पाँव में कीचड़ भर गया। सड़क के लेफ्ट में और राइट में दोनों में देखना है। एक तरफ औरतों की ट्रेडिशनल ड्रेस पहले हुए, आपको धोती पहने हुए दिख रही हैं, और मर्द ऐसे कपड़े पहनते हैं इधर। I had to get down and push my cycle more than once. That day I was deep into the rural heartland of Maharashtra. राइट में ईख लगा है, यानी गन्ना। नमस्ते वकील, नमस्ते।
सोचता हूँ इधर बैठ के चाय वाय पी लूँ थोड़ी। A local man warned me it is not safe for the outsider. Be careful when you are riding here. But I was already in the middle of nowhere, so I kept moving forward. There was nothing else I could do. पहला पड़ाव है ब्राह्मणवाड़ा। तो बोला गया है कि जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपको अपना सामान किसी के भरोसे पे छोड़ना नहीं है। At one point, a man called me from behind. थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? जय गोड से थैंक यू विजय भाई। ये हाथ करा चलो ऐसे ऐसे करते हैं। थैंक यू। He not only offered me water, but also handed me a big bag of eatables. And it was completely out of kindness. ले लो ये तो बहुत है। जाओ खाके जाओ जाने का ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर जाके खाने का आराम ऊपर जाने का खाने का किले पे बैठ के आराम से खाओ। आराम से चौड़ाए खराब नहीं अच्छा होता वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू। He also suggested me to take a detour to Pamgiri Fort. I was excited. I climbed up, but it was only to be completely disappointed. साइकिल को धक्का मारना ही इतना मुश्किल लग रहा है, साइकिल इस पे चढ़ती कैसे? 700 मीटर रह गया है लास्ट का। दिखाता हूँ आपको। ऐसी चढ़ाई है। There was nothing at the top, just an old temple, not even a single standing structure. पार्किंग से निकल के सबसे पहले आप पहुंच जाते हैं पेमा देवी टेम्पल। अभी अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से महाराजा शिवाजी महाराज का बर्थ इधर होने वाला था, लेकिन जाकर हुआ शिवनेरी में। सीता माता को वो जो शिवाजी पैदा हुए ना, हाँ उस टाइम में ना वो रात को है ना यहाँ आई। हाँ, तो यहाँ आके रहेंगे कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, या कुछ नहीं, उसको अच्छा नहीं लगा ना, हाँ करके वो शिवनेरी गई यार। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो जंगल लग रहा है पूरा बस। हाँ, ये जंगल है। मुझे लगा किला मतलब बहुत बड़ा महल होगा कोई। नहीं, महल नहीं ऊपर। I was surprised why the hell they call it a fort when there is nothing being built. A little disheartened, I descended and continued through Pamagri village. The ride was tough, but the beauty of the village life kept me going. चढ़ाई है जो मैं चढ़ के यहाँ तक आया। एक पहाड़ चढ़ो, दूसरा, तीसरा, खत्म ही नहीं हो रहा है। इनको घाट कहा जाता है इधर में। This all felt like a real Maharashtra, far away from the shiny cities lights of Mumbai and Pune. This was the place where the real Maharashtra lives. Bad road, wrong turns and big lessons. The roads got worse. At one point, I took a wrong turn that cost me 6 extra kilometers. I was frustrated, I was tired, but I had to keep moving. I was riding on a very bad road. That's when Eknath Bhau came into the picture. 10 रुपए का चाय होता है। लेके जा रहे यार, तू कितने मेहनत करता है। हमारा बच्चा है तो ये इस बात तुम्हारे बात। अच्छा ऐसा है। हाँ। तो देख रहे हैं आप लोग, ये इंडिया है मेरा। ऐसा हमारे देश में हो सकता है सिर्फ, बाकी कहीं नहीं। मैं कहीं अच्छी जगह यूज करूंगा इसको। आपका नाम क्या है? एकनाथ कानोडी। और ये जगह कौन सी है? लिंगदेव गांव है। हाँ। लिंगदेव का जो मंदिर है वो इधर है। हाँ, इधर है लिंगेश्वर महादेव इधर है। हाँ। वाह, चलिए बहुत अच्छा। He offered himself to arrange my stay there in Brahmanwada. On the way, another local insisted that I should stop for a cup of tea. आपकी चाय पी के जाऊँ? चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सुनील नाइकवाड़ी। सुनील नाइकवाड़ी है। I kept crossing hills one after another. I was pushing through the fatigue. That day was without a doubt the most difficult day of riding in Maharashtra. The sun was setting and I still had 5 more kilometers of steep climb to reach to Brahmanwada. खजूर के इन 3 पेड़ों के बीच में से कितना अच्छा दिख रहा है सनसेट होता हुआ। कितने पहाड़ मैंने क्रॉस किया आज, ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी भी 5 किलोमीटर दूर हूँ और पहाड़ी इलाका है तो 1 घंटा और लगेगा। घड़ी में टाइम हुआ है 6:30 बजे, तो 7:30 या 8 बजे तक मैं पहुँचूँगा ब्राह्मणवाड़ा। तो अभी हालत ख़राब हो गई है और घाट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। One thing I noticed in the rural areas of Maharashtra that Maharashtrian people are deeply respectful and shy. तो अच्छा, यहाँ के लोगों में एक अलग चीज़ देखी मैंने।
रात में मैं अगर पैदल भी साइकिल चढ़ा रहा हूँ घाट पे, एक भी आदमी ने ब्रेक लगा के रुक के पूछा नहीं है कि क्या हुआ है। बहुत शाई नेचर है यहाँ के लोगों की। कोई कार वाला, स्कूटर, बाइक कोई नहीं रुकता, बस निकल जाते हैं पास से। As it was dark and I was mostly alone, there could be the people or the robbers hiding there in the dark. Just to keep myself safe, to stay alert, I took the knife in my hands just in case if something happened. सच बताऊं, सेफ्टी के लिए मैंने हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ है। किसी ने कुछ पंगा लिया ना, खलास। आरी वाला चाकू है, बढ़िया कट मारेगा। It was a reminder that safety is always the part of the adventure. I called up Eknath Bhau from there and he immediately said he would come and help me. एवढे का गाठ जावर हाय ओके आया वो कानवडे साहब लिंगदेवसी हाँ हाँ, वो आया उधर से आ रहे हैं अभी। हाँ वो आया तो मेरे को रुकना है कि आगे जाना है? नहीं तो बोले इधर रुक जाओ, वो आया है। He came there on his motorcycle. He tried speaking to several people, but after many rejections, finally he took me one of the shop, and there they suggested me to stay into a school building. अच्छा, पीछे स्कूल है। आज भी दो उसके पास दो तीन स्कूल है, किधर भी जाओ किधर भी सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। Eknath Bhau even paid 100 rupee for my dinner and then left from there. पोस्ट करने का पैसा ले होते उसना अभी आप जा रहे हैं वापस? वापस जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपका। ऐसे नहीं है, गले मिल के जा। थैंक यू। That night I had 2 vada paos for dinner. Later, an elderly man guided me to the nearby temple. In the temple, they let me sleep inside the sanctum itself. काकड़ा तुमको मालूम नहीं काकड़ा क्या बात है? नहीं, ये ऐसा पांडुरंग का ध्यान है ना, वो करते 4 बजे उठते। अच्छा, 4 बजे से शुरू करते हैं। बहुत As told by him, at 4 o'clock in the morning, locals came and the temple program began. It was surreal, once in a lifetime experience. It was something which I have never ever imagined. So there was a house in front of the temple. So Raju Bhai and his family, they warmly offered me the breakfast in the morning. तो हिंदी आप दोनों को आता है बस? So after thanking everyone who helped me on the previous night, I resumed my journey towards Shivneri. का सफर है शिवनेरी पहुंचने का, जो सिर्फ 35 किलोमीटर है। देखते हैं कितने टाइम में पूरा कर पाता हूँ। So this is the birthplace of Shivaji Maharaj. कल पूरा दिन साइकिल चलाने के बावजूद भी मैं 47.5 किलोमीटर ही कवर कर पाया था। देख लो हमारा आज का टारगेट, पहला पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़। On the way in Ottur, I was stopped by someone who insisted me to have a chai with him. He turned out to be a motorcycle mechanic and invited me to visit his shop. की शॉप ही उधर ही है। उन्होंने बोला कि पहुंच के आप फोन कर देना। जुन्नर आ गया है। ये चौक है शिवाजी चौक। चौकी पे वो कॉर्नर पे आपको एक बुर्ज नजर आ रहा है। When I reached Shivneri, Shrikant Bhau came and helped me to find a place to leave my bicycle and walk up to the Shivneri fort. I have shared the detail of Shivneri fort into another video. You can go to my another channel, Cycling Beast, and watch it there. It was 5:30 p.m. I returned to Shrikant Bhau's shop. ये उनकी शॉप है। तो His son took me for a dinner. मेरे साथ हैं अर्थव। That night, they allowed me to pitch my tent in front of the shop and slept there. The next morning, after a warm goodbye, I began cycling towards Pune. By the time I reached Pune city, it was already 7 p.m. Following the recommendation of Kishore Kale Bhai from Nasik, I went straight to this shop which is called Cyclogist. But unfortunately, the part which I needed, it was not available with them. But the staff at the shop, they were kind enough to allow me to sleep there in the courtyard that night. When I was struggling to find out where that part of my bicycle will be available, one of my friend, he asked me to go and visit Vipin Bhau, who is working in Decathlon. He sent me his location. So when I went to his house, which was in a nearby village, so there not only I got a place to stay. यही आपके मम्मी आ रहे हैं ना? ठीक है ना? जी जी, बहुत अच्छा हूँ मैं। आएगा आप इतने दूर से तो खाना ही पड़ेगा। Vipin Bhau also took me on a beautiful tour of the village. मुझे अपनी एक फेवरेट जगह घुमाने लेके जा रहे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि कवर नहीं हो पा रहा है।
रही थी तो कुछ ज्यादा ही निखर के सामने आ रही थी। I decided to leave my bicycle there and try to search for this particular part of my bicycle in different cities. So I traveled to Gurgaon, tried to find it out from there. But unfortunately, I had to return after 2 weeks without the part. बाय बाय। So 2 weeks later, I returned. So when we were struggling about it, one of the Vipin Bau's contacts suggested visiting a shop which is known as Velocraft. किलोमीटर राइड करके मैं शॉप पे पहुंचा। हाय, निकलने के इसमें आए हो क्या? हाँ सारा सामान लेके आया मैं तो। I went there and within the minutes, the mechanic installed the new crankset and had my bicycle ready to roll again. शिफ्टिंग प्रॉपर? गुड नाइट। ओके बाय बाय। Later in Pune city itself, I was welcomed by Tejas who took me to his home. सोल कड़ी बोला आपने? हाँ, सोल का तो पीना होता है, ये ड्रिंक है, ड्रिंक है। ये बेसन का बना पिछला है और बेसन कड़ी जैसा है। बाकर वाड़ी। पिछला खा रहा हूँ मैं इस वक्त जवार की रोटी के साथ, जिसको भाकड़ी बोला जाता है। I stayed with him for few days and we explored several amazing places including Siahnagad Fort and Shaniwar Wada. I know Tejas because when he was traveling from Pune to Leh Ladakh, he stayed at my home in Chandigarh. According to him, it was the payback time. I believe that cycling is truly about the beautiful community of givers and travelers. And not only this, when I finally left Pune, I was hosted once again and this time it was by one of my subscriber, Umesh ji. कैसे रहा? मैं बहुत बढ़िया सर। अभी तक क्या हो रहा था कि लोग मिलते थे और फिर जाके बातचीत होती थी और चैनल को सब्सक्राइब करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं और उनसे मैं जाके पर्सनली उनके घर पे मिल रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। सो इनका नाम उमेश जी है और इन्होंने आज मेरे को लंच पे इनवाइट किया है। सो ओके वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेरी टेस्टी। अब जब हाईवे पे लग जाएंगे यहाँ से, हाँ तो यहाँ से तो वहाँ से चढ़ाई लग जाएगी कम से कम 10-15 किलोमीटर कंटिन्यू। After bidding him farewell, I hit the road again. बाय बाय। ओके जी। ओके। That night it turned out to be special. It was the first time in over 200 days of my journey that I slept at the petrol pump. Next day, I decided to reach Satara, a place I had heard a lot about. But before reaching there, I had to conquer the Khandala Ghat, and it was one of the most difficult climb. Climb almost over. As I pedaled through the scenic route, I saw roadside stalls. They were lined up and selling strawberry. तो ये यहीं पे उगता है क्या इधर? ये खेत छोड़ के हाँ, तो 20 रुपए का मिलेगा, है ना? अब सब लोग स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं, मैंने देखा है। हमारे से लेते हैं। When I was cycling, there I met with a young man who has taken an incredible challenge. दीपक गुज्जर सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से बड़े कोई जाति नहीं होती। दीपक नहीं रहेगा तो दिया का क्या करोगे? हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जातियों का क्या करोगे? इसलिए जातियों में न बढ़ के एक हिंदू बने और संगठित रहे। When I was cycling here, I noticed one thing, that every shop was selling Kandi Peda, a local sweet dish which I had not seen anywhere except Satara. There in Satara, with the help of Kishore Bhai, whose reference I received from Vipin Bhai, I got a place to stay into a automobile agency which is known as Gajanan Automobile. There I stayed for some time and visited the Satara fort. जीता नहीं किया है, जो ऐसी जगह पे बना है जो strategically best location. After visiting the Satara fort, I said goodbye to the Parveen Bhau and resumed my journey. तो so nice of you. When I started, I was not aware of that the most difficult time was waiting for me ahead. So what happened, when I was riding near Umbras, a sweet shop owner selling the pedas invited me. We had a quick snack on a roadside stall, but soon after I started feeling uneasy. पूरी पेन है यार, बात भी नहीं कर रही। ये 3-4 घंटे से शुरू हुआ है। सांस भी ले रहा हूँ ना तो लग रहा है छिल जाएगा गला सांस से भी। तो 10 मिनट रेस्ट करके फिर मैं निकलता हूँ आगे। MIDC में वो फैक्ट्री है जहाँ मुझे जाना है। फुल बॉडी एक, थ्रॉट पेन और ऐसे ही
सर में दर्द। So I decided to pause the ride and rest. Luckily, I got the permission to pitch my tent inside the factory compound. I had to stay there for 2 days. When I was not well and there was nothing to eat, I thought to go to the nearby shop, but there I could find only the vada pav. And this is when a kind-hearted laborers group, they came and they shared their own sabji and roti with me, and that was really kind of them. तो चपाती विद सब्जी खाने को मिल गई, अब लग रहा है कि पेट भर गया। इसके लिए आपको The next morning, I said goodbye and started riding again. for your journey. थैंक यू सो मच सर। Finally, I reached this place named Karad. There, I was surprised by Shrikant Palekar Bhau, who is a subscriber of mine, and he came there from a far distant place just to say me hello and meet me. We shared a great meal and had a deep conversation. तो टाइम टू से गुड बाय सर। Meanwhile, another cyclist named Santosh Bhau, who is riding from Maharashtra, Pune to Kanyakumari, he also wanted to meet me. So I planned to catch him up. So it was 6 o'clock when I crossed Kolhapur, but I could not make it to the place where Santosh Bhau was waiting for me. So that night I decided to spend my night at the fuel pump, where they generously allowed me to sleep inside the driver's room. Next morning after packing, I immediately started riding again, but I didn't go far because my rear tire got punctured. When I called up Santosh Bhai, I came to know that he is at a particular location which is known to be a farmhouse owned by a local politician or a corporator. इधर का अलग डिश है, इधर ही मिलता है क्या? तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, तिक्का है तांबडा, वो मीठा होता है। ये मटन है बकरे का, ये मुर्गी का, ये चिकन है, दही कांदा। ये लंच होस्ट किया है नगर अध्यक्ष निप्पानी। जयसिंह पटेल सोनगी। It was 3 o'clock when we said goodbye after the lunch and started the ride. अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। But soon it was dark. Because Santosh Bhai could speak Marathi very well, so it was really helping out. So he could go and speak to the locals. With some efforts and talking to the locals, he arranged a stay in a school building. But I had to refuse because there was no electricity available, and I wanted to have the electricity connection so that I can work on my video that night. Leaving that place, we went to Sankeshwar temple, but there also we could not find the stay. But we took the blessings of Lord Shiva and started riding again. टाइम हुआ रात के 8 बजे का। मठ के गुरुजी हैं, वो नहीं है अभी, हम लोग अभी हाईवे निकल रहे हैं। There was the Jio petrol pump. When I went there and I asked for the permission, they immediately permitted us. But the problem was, संतोष के पास टेंट नहीं है, सिर्फ स्लीपिंग बैग है। then came another offer, a Rajasthani hotel. रहने के लिए परमिशन दे दी है, मैं शायद यहाँ के टेंट लगा करके रुक जाऊंगा, भाई स्लीपिंग बैग में सो जाएंगे। But it was full of mosquitoes. Finally, with lots of effort at Ananda Hotel, we could arrange our stay, and that was into a room. And this is how our struggle came to an end by finding that place to stay. The next morning, we packed up and hit the road again. हाँ, सुबह 7 बजे का टाइम है, आज स्टार्ट कर रहे हैं। गोवा रह गया 150 किलोमीटर्स। On the way, we met with 2 fellow cyclists. सपोर्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी है। Yeah, so Pedals for Cause is adventure with purpose. Last year, me and my brother Suyesh, we did Mumbai-Goa coastal ride and we raised around 1,39,000. And this year, we are also supporting one organization based out of Pune, which works for persons with disability. And right now, we have raised around 75K. We also came across a dog that had been hit by a car. We stopped there and tried to do our best to help him. चेहरे पे यहाँ चोट लगी है और ये टांग लग रहा है जैसे टूट रही है, स्वेलिंग है यहाँ पे। आज सड़क पे गिरा हुआ था, उठा के साइड में रखा अभी। बेलगांव में एक NGO है बाबा के नाम से, मैंने फोटो खींच के भेजी है, एड्रेस भेज दिया है, लोकेशन भेज दी है, होप सो कि कोई आ जाएगा। From Belagavi, we finally entered into Karnataka, and this is when I had my first plate of idli on the whole journey. Riding via Kanpur, I kept moving towards Goa. सो गोवा की जो लोकेशन है गूगल मैप पे, वो अब दिखा रहा है 98 किलोमीटर्स। On the way, when I was cycling, I got surprised to see a flying squirrel. है ना, कैसे उछल उछल के जा रहा है, होए होए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, ये जंप। I bought some banana from the roadside vendor. बस 25 का दे दो। 25 हाँ इसमें डालो। हाँ, इसमें डालो।
गोवा अब रह गया 61 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। And that night, finally, after a long ride, I could entered into the Goa. That night, I got permission to pitch my tent and sleep on the petrol pump. 6:30-7 के बीच में पहुंच गया था, मैंने टेंट लगाया था करीब 10 बजे। And this is how my cycling journey across Maharashtra came to an end. I was happy because the part of Maharashtra which I could see, most of you have not even seen. If you like this kind of a story of my cycling adventure in different states and different countries, then subscribe to my channel World Wanderer Cycling on a Budget and hit the bell icon so that you get the notification of my videos first. It was a journey of 9 months alone there in Gujarat. I'm giving you the link of that video here. After this, please go and watch that. And those who have supported me on my journey, their names are given here. Please say them thank you on my behalf. That's all for now. We will meet into the next video, which will be from Goa. Don't forget to watch. Till then, take care of yourself. Bye bye and keep smiling.